ओम गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरु परंपराय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। Let's start Purusha Suktam. Please don't tell Purush Suktam. That is, if you chant it like that, it will be, Purush Asuktam. That is the problem. That is why the only reason of my being perfectionist, if you don't practice, you are chanting the absolute wrong thing, whose meaning is absolutely different. Like, Asatoma Sadgamaya, Om Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya. Then Mrityurma Mritam Gamaya. If you don't chant it in that way, if you give pause, Mrityorma Mritam Gamaya. But the thing is, Mrityorma Amritam Gamaya. Sanskrit is structured in that way. If you don't chant properly, then you are praying wrongly and you are getting the result accordingly, and you are complaining to the God that I prayed so much and you gave me this result. Are you asked for? That is why Bhagavan has given. So you see, it is Purusha Suktam. Please don't tell Purush Suktam. Purush के बाद, क्योंकि this is Sandhi, it will be. Okay. Om start. तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ओम शांति 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 हरि ओम। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वशेषानः यदन्येनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनान् शने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्भविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यदग्नं तन्वानाः अवध्नन् पुरुषं पशुं तन्यज्ञं वर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि यज्ञिरे छन्दागुंसि यज्ञिरे तस्मात्
यजुस्तस्मादजायत. Clear? Now we will start learning. तस्माद् अश्वा अजायन्त. तस्माद् अश्वा अजायन्त. जो सिंपल है उसमें I will not pay too much time. Can you all please open up your video? Like Sarla More, Kiran, Sugans, Jyoti, and Vijay Amma. If it is possible. Oh, Jyoti, after a long time. Thank you. You are yoga expert. I saw your YouTube. Okay. Thank you. Pranam Swamiji. Yes, yes. Okay, let's start. Tasmad Ashwa Ajayanta. Tasmad Ashwa Ajayanta. Ye ke cho bhayadatah. Ye ke cho bhayadatah. So, tasmad ashva ajayanta ye ke cho bhayadatah. Clear? Gavo hajagni re tasmaat. Gavo hayagni re tasmaat. Together? तस्माद् अश्वा. स्वामी जी एक मिनट. गावो ह यज्ञिरे तस्मात्. आज प्रमीला अम्मा नहीं आया क्या? वो हाँ हाँ आया आया आया. ठीक है ठीक है ठीक है. स्वामी जी उसमें तो ज लिखा है. ज ज ज्ञ में छोटी इकार. Yagni Re. Jagni re. Yes, what I chanted. Did I chant? You chanted Yagni Re. Oh, sorry. Then I am wrong. स्वामी जी हम अचानक खो गया हमसे. हम लोग 5वें श्लोक में, कौन से श्लोक में है मेरे? 5 कहाँ शुरू से किया है. शुरू है? तस्माद् अश्वा अजायन्त. 5वें में है हम लोग. हाँ 5वां Yes. शुरू हुआ है. हाँ जस्ट. हाँ सॉरी मिल गया. थैंक यू. हाँ थैंक यू फॉर करेक्टिंग. तस्मात् जाता और वाक्यम. Okay, please mute. तस्माद् अश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः. गावो हजग्निरे तस्मात्. गावो हजग्निरे तस्मात्. तस्मात् जाता अजावयः. तस्मात् जाता अजावयः. Together. तस्माद् अश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः. गावो हजग्निरे तस्मात्. तस्मात् जाता अजावयः. Clear? यत् पुरुषं व्यदधुः. यत् पुरुषं व्यदधुः. Again from the first. तस्माद् अश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः. गावो जग्निरे तस्मात्.
तस्मात् जाता अजावयः यत् पुरुषं व्यदधु. Clear? Any doubt? स्वामी जी वो फिर से बोलिए ना, तस्मा आ जाता. तस्मात् जाता अजावयः तस्मात् जाता अजावयः. Clear? स्वामी जी तस्मात् अजाता No, अजावयः. no. Please listen to it properly. ओके Tasmaat jata. Don't break it. In the same breath. तस्मात् जाता अजावयः. Amma, और let me ये finish first. When our नहीं स्वामी जी conversation will नहीं, एक मिनट खाली ये समझना चाह रहे हैं कि ऊपर में वो जो 2 लाइन है उसके लिए आप इसको लंबा कर रहे हैं ना, जो आप हम लोग को बताए. I want to ask you another question. ओके Did you attend last class? आई स्वामी जी ट्यूसडे को हम 11:30 के बाद निकल जाते हैं क्लास से, हमारी दूसरी क्लास रहती है सर. Vedic mute कीजिए please. जेटली जी म्यूट कीजिए. आप देखेंगे कि ये वैदिक चैंटिंग जो है उसके नीचे कुछ कुछ ऐसा लाइन है, दिखाई दे रहा है. जस्ट रेज योर हैंड, डोंट टॉक, साउंड्स डिस्टर्ब्स मी. ओके, देन यू विल फाइंड सम वर्टिकल वर्ड. ओके, and you will find sometimes 2 vertical lines. So they have grammatical name. Sarita, Udatt, Anudatt. Okay, so which one is down? This is called Sarita. Sarita, which is going up, that is Udatt. And which is no nothing else, that is Anudatta. And that is the 2 lines, that is Dirgha Udatta, like that. Don't go into the snarls of technicality. Technicality में मत फांसो, समझने का कोशिश करो कि नीचे दिया है. नीचे दिया है मतलब ये तो देखने के लिए नहीं, ऐसे करना पड़ेगा, नीचू होके सुनना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं. हम लोग तो ओडबोस नहीं करेगा वैदिक किताब लेके. तो हम लोग का स्वर का फैक्टर है, आवाज का फैक्टर. तो व्हेनेवर वी विल सी द डाउन बॉटम लाइन, वी विल पिच डाउन आवर वॉइस. हमारा आवाज थोड़ा नीचे करूंगा. जब हम लोग देखेंगे ऊपर में ऐसा करके, मतलब गला, आवाज थोड़ा ऊंचा आवाज में बात करूंगा. और जब हम लोग देखेंगे कि ये 2 लाइन है, तो इसको थोड़ा दीर्घ समय तक, दीर्घ मतलब 5-7 मिनट नहीं, 1 सेकेंड ज्यादा करेंगे. ठीक है, इसका ग्रामेटिकल जो है, एक बार ऐसे लगाने से आप जितना टाइम दे रहा है उसका जस्ट डबल. ठीक है, तो जैसे हम लोग देखिए, ये इसका ही लीजिए 5 नंबर का, तस्मात्. पिछले दिन मैं सारे अम्मा को प्रैक्टिस करवाया, तो दे गॉट द आइडिया व्हाट अबाउट पिच डाउन एंड पिच अप. तो तस्मात् अश्वा अजायंत. क्लियर? ये के चो भयादतः, चो भयादतः. गावो
हयग्निरे, उसके बाद देखिए तस्मात है, उसके ऊपर ऐसा है, उसका कैसे हम लोग उच्चारण करेंगे? तस्मात गावो हयग्निरे तस्मात. Clear? So whenever you will find any two lines, please keep it in your mind, register it in your mind. Your chanting style will be like that. It's very easy. It's not at all easy. If you every day at least once listen to this mantra, it's really more easier than water. And if you don't listen to it, and if you try to practice it by yourself, gone you are. Don't practice it. I told you, don't practice it by your own self. Just switch on the YouTube and listen to it. It's my humble request to you. Nobody else. Don't practice it by your own Vedic chanting. It will be guided wrongly. You will be guided wrong. Okay? I think I am clear. Just raise your hand. Don't unmute, please. Okay, Pramila Amma? Yes, thank you. Let's. Mukham kimasya kau aho. Oh, now उसके पहले था. Yat purusham vyadadhu. We have finished after that. Katidha vyakalpayan. From first of this fifth mantra. Tasmad ashva ajayanta ye kecho bhayadatah gavo hayagnire tasmaat jata ajavayah yat purusham yadadhu katidha vyakalpayan mukham kimasya kau bahu. Mukham, you always remember all the grammaticals you learned. जहां पर दीर्घ स्वर वर्ण है वहां पर दीर्घ उच्चारण होगा, जहां पर छोटा ह्रस्व स्वर वर्ण है वहां पर छोटा उच्चारण होगा. ह्रस्व स्वर वर्ण क्या है? अ, इ, उ, रि. फिनिश. एंड बड़ा क्या है? आ, ई, उ, ए, I, O, Au. Clear? Here also the same thing. Mukham kimasya kau bahu. Clear? Kavuru pada uchyete. From first. Tasmadashva ajayanta ye kecho bhayadatah gavo hayagnire tasmaat jata ajavayah yat purusham yadadhu katidha vyakalpayan mukham kimasya kau bahu kaburu pada uchyete. Clear? Wonderful, na? Brahmano-osya mukhamasit. This is little bit tough.
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत। तो इसको ठीक से करने के लिए, ढंग से करने के लिए आपको पहले से लेना पड़ेगा। कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत। I'm telling it's more easier than water. If you once, अगर आप पकड़ ले सकते हैं ना इसका ट्यून को, और ये जीवन के लिए एक अचीवमेंट है जो मैं पुरुषोत्तम जानता हूं। अगर कोई आप शंकर मठ में कहीं जगह पर, ट्रेडिशनल जगह पर पढ़ने जाएंगे तो जस्ट पूछेंगे पुरुषोत्तम जानते हैं, चैंट करो। And it's very small suktam. This is the easiest suktam. Okay. ये सबसे सीधा एंड सरल। आप लोग इसके ट्यून के साथ परिचित नहीं है इसलिए आप लोगों को कठिन लग रहा है, लेकिन प्लीज बिलीव ऑन योर टीचर, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट। ओके। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः बाहुराजन्यः कृतः। Together we will chant. तस्माद् अश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हयग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का भूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः बाहुराजन्यः कृतः। Clear? Anyone has any doubt? I think doubt should not be there. Yes, the sixth one. What a beautiful exponent. लेकिन देखिए, इसलिए बोलते हैं कि आचार्य की सेवा वेद पाठ मत कीजिए। बोल रहा है ये विराट पुरुष है, सहस्र शीर्ष पुरुष है, उसका उरु थाई से वैश्य का जन्म हुआ है। देन बाद में लिखा है पदभ्याम शूद्र अजायतः, पाव से शूद्र पैदा हुआ है। तो लोगों को लगेगा भाई शूद्र मतलब पा, तो वेद में ही ऐसे डिस्क्रिमिनेशन है, आपका धर्म ही ऐसा है। All such question will come. So you know why we worship Guru Paduka? क्योंकि एक छोटा सा हम लोग चांदी का कुछ बना लेता है और उसके पादुका के रूप में पूजन करते हैं। क्यों भाई, हम लोग शिरस्त्राण भी तो पूजा कर सकते थे, हम लोग मस्तक भी पूजा कर सकते थे, क्यों पादुका? Because if we consider that our guru, our teacher is the embodiment of all ideals, सारे आदर्श का, चरित्र का, धर्म का स्वरूप है, प्रतीक है मेरा गुरु, मेरा टीचर। और उस आदर्श को किसने धारण करके रखा? That is the Paduka. That is why by worshipping Paduka, we actually worship the entire dharma. Clear? Chalo, it will take a lot of time. If you want to know more explanation, come in the morning class. That is the class of explanation. Or go to the YouTube channel, Beauty of Vedanta, and listen to it.
ऊरु तदस्य यद्वैश्यः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः। अब देखिए ना, यूज योर फिंगर, एवरीथिंग विल बी इजी। ऊरु तदस्य यद्वैश्यः। Now you will ask me, you may ask me question. That is why I am telling you, don't ask me question. Here you will find Padvyagum Sudra Ajayata, but in tradition I have seen Padvyam Sudra Ajayata. You please write it down. Don't ask me why. Tradition. Padvyam Sudro Ajayata Uru Tadasya Yadvaishyaha Padvyam Sudro Ajayata. See how the Vedanta is coming. Chandrama Manaso Jataha. The moon is nothing but the product of our mind. Chandrama Manaso Jataha Chakshor Suryo Ajayata Chakshor Suryo Ajayata. From eyes, sun has taken birth. Yes, Nikita. Swamiji, are you saying Chakshor? Ra in the end? Actually, it comes in the Sandhi, Chakshos Surya. Correct. That is also correct. Here I am not incorrect, but yes, you chant according to the book. Chakshos Suryo Ajayata. Chakshos Suryo Ajayata. In some book, some part of Veda is there. But most of the books, Chakshoho Surya. Okay. Mukhad Indraschagnischa. Mukhad Indraschagnischa. Pranad Vayurajayata. From Prana, Vayu has taken. Nabhya आसीद अंतरिक्षम. हमारा जो नाभि मंडल है, from there that antariksha has come out. Shiršnodyo samavartata. Shiršnodyo samavartata. Padvyam. Here also Padvyam. Padvyam bhumir dishasrotraat. Padvyam bhumir dishasrotraat. Tatha lokagum akalpayan. Tatha lokagum akalpayan. Now, this sixth mantra we will chant many times. Okay, ready? You can see. Uru tadasya yadvaishyaha padvyam sudro ajayata chandrama manaso jataha
चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् टुगेदर ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन्. Once more. ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन्. Clear? We will chant 5 and 6 together. What we have learned today. तस्मादश्व अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काबूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन्. Together once more. तस्मादश्व अजायन्त एकेचो भयादतः गावो हयग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु काबूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः ऊरु यदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत
चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन्. Once more we will chant. तस्माद् अश्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हयग्निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहुः कावूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशस्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन्. Thank you.